Assalamu alaikum. Can you hear me? Okay. कोई सवाल कल से मुतल्लिक? Okay, as you know, the date for the final exam is announced, so that will be starting from a week after the next. So इसका मतलब ये है कि हमारा एक आज सेशन है एंड देन वी विल हैव 2 more classes. Syllabus clearly will be whatever we study till the last day. अगले 2 lectures जो होंगे इसके बाद उनमें भी जो कुछ हम पढ़ेंगे वो हमारे कोर्स का हिस्सा होगा एग्ज़ाम के लिए.
मिड टर्म का सिलेबस इसका हिस्सा नहीं होगा। मिड टर्म के बाद जो कुछ हमने पढ़ा वो इसका 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 हिस्सा होगा। इसका मतलब प्राइमरीली ये है कि जो सेकंड कोर्स था हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक, ये सारे का सारा हमारा सिलेबस होगा फाइनल एग्जामिनेशन का। एग्ज़ाम का पैटर्न भी जो है दैट इज़ प्राइमरली 20 MCQs, so we will have 20 to 25 MCQs and the remaining will be mixed questions as we had in the midterm examination. So prepare well for that. Okay, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद इट। जी, I shared that यहीं क्लासरूम में मैंने लिंक शेयर कर दिया था यार। ढूंढ के किया था, दोबारा ढूंढ के करूंगा पुत्र। ठीक है, आप ये थोड़ा सा वैसे गूगल में खुद भी सर्च कर लेंगे, यू विल गेट दैट। सवाल भला क्या था हमारा? डू यू रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वी हैड? लाइक वी p value based on z score, right? That is what we were talking about, right? Yeah, this is the link. So ये मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आई गेस यही है। आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने यही किया था या नहीं, लेकिन this is the one, p value from z score calculator. Yes, so you can put the value here and तो आप इसमें बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल और वन टेल्ड है या टू टेल्ड है हाइपोथेसिस, वो आप सेलेक्ट करते हैं, राइट? तो ये दो मिनट चेक करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर z। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं दैट इज सेटिंग अप अ टेस्ट ऑफ डिफरेंस इन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। सो लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल देखी थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से, वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे थी, और आज हम जो एग्जांपल देखेंगे वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस पे है, राइट? सो अगेन वी हैव दैट एग्जांपल ऑफ CS मॉड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। स्विमिंग के मतलब जो डेटा हमने डिस्कस किया था, दिस इज अबाउट दैट। So the research question that we have is there a significant difference between the population proportions of parents of black children and parents of Hispanic children who report that their child has had some swimming lessons? So the population is all parents of black children and all parents of Hispanic children. ये हमारी target population बनती है। और हमारा पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शंस ऑफ द रिपोर्टिंग। सो वी कॉल इट से P1 minus P2, where 1 represents the parents of the black children and 2 represent the parents of the Hispanic children, right? So हम उनमें से जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने स्विमिंग लेसन्स लिए थे, उन प्रोपोर्शंस का डिफरेंस नोट करने में इंटरेस्टेड हैं इस केस में। So we would be testing for a significant difference in the population proportions of parents reporting that their child has had swimming lessons at the 10% significance level. So हमने जो significance level इस केस में चूज किया है that is 10%, and we will be noting कि क्या in population proportions जो reported हैं इनमें difference है या नहीं है, right? And according to this we will be formulating our hypothesis. So the null hypothesis that we have is that P1 minus P2 is 0. We say कि हमारा डिफ़ॉल्ट हाइपोथेसिस ये है कि दोनों पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस में कोई फ़र्क नहीं है। यानी जो प्रोपोर्शन ब्लैक चिल्ड्रन के पेरेंट्स का है जिन्होंने अपने बच्चों को स्विमिंग लेसन्स दिलवाए, और जो प्रोपोर्शन हिस्पैनिक चिल्ड्रन के पेरेंट्स का है जिन्होंने अपने बच्चों को स्विमिंग लेसन्स दिलवाए, दोनों प्रोपोर्शंस आपस में बराबर हैं। And obviously likely जो alternative hypothesis हम लेते हैं that is P1 minus P2 is not equal to 0. अब यहाँ basically यानी हमें ये तय करना होता है कि हम यहाँ कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे। जो और सिंबल्स यहाँ पे कैंडिडेट हो सकते हैं
वो ग्रेटर देन हो सकते हैं, वो लेस देन हो सकते हैं। यानी अगर हम कहें कि P1 का प्रोपोर्शन P2 से ज़्यादा है तो हम इसको ग्रेटर देन 0 कहेंगे, और अगर हम ये कहें कि P1 का प्रोपोर्शन P2 से कम है तो हम इसको लेस देन कहेंगे। यहाँ हमने लेस देन या ग्रेटर देन की बजाय not equal को प्रेफर किया है, because the research question basically says, is there a significant difference between population proportions? It is not saying कि P1 का proportion, क्या P1 का proportion ज़्यादा है या P2 का proportion ज़्यादा है। अगर ये ऐसा कहता तो फिर हम less than या greater than symbol accordingly choose करते। But here the question is there a significant difference between the population proportions? So that simply means we need to test whether it is different or not different. So not different इक्वल से रिप्रेजेंट हो जाता है, और डिफरेंट जो है वो नॉट इक्वल से रिप्रेजेंट हो जाता है. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म आवर hypothesis in this case. And the significance level that we have narrated in the research question is 10%, so we take alpha to be 0.10. Okay, so next obviously we go for the data collection. So say we have this data, a sample of 247 parents of black children aging from 6 to 18 was taken, with 91 saying that their child has had some swimming lessons. And on the other hand, a sample of 308 parents of Hispanic children aging from 6 to 18 was taken, with 120 saying that their child has had some swimming lessons. सो वी नो कि क्या क्या proportions हमारे पास दस्तियाब हैं बोथ ब्लैक चिल्ड्रन के पेरेंट्स के और हिस्पैनिक चिल्ड्रन के पेरेंट्स के, जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने स्विमिंग लेसन्स लिए. So we first check the assumptions now. We need to assume that we have two independent random samples. तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास independent random samples है, right? So this is something that obviously can be made sure when you're collecting the data. So once we have the data, we can only assume and hope for good that yes, we have indeed the simple random samples. The second thing is we also need large enough sample sizes to assume that the distribution of our estimate is normal. तो हमें बेसिकली लार्ज इनफ सैम्पल साइज चाहिए, लेकिन यहाँ लार्ज इनफ सैम्पल साइज में हमें पर्टिकुलरली ये कहना है कि हमें ये मेक श्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वो नॉर्मल हो, राइट. सो टू मेक श्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल इज समथिंग दैट वी नीड टू टारगेट हियर. ओके, अब ये चीज़ हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? वी विल बी ऑब्वियसली सेइंग द सेम थिंग दैट वी हैव सेड अर्लियर. जो चीज़ हम पहले कह रहे थे वही चीज़ हम दोबारा अब यहाँ कह लेंगे, राइट, कि ये जो सारे प्रोपोर्शंस हैं n1 into p hat and then n1 into 1 minus p hat, then n2 p hat and n2 into 1 minus p hat, ये सब के सब जो है वो एटलीस्ट 10 होने चाहिए. लेकिन इस केस में चूंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम प्लेन केसेस की बजाय we will be looking at, we need to estimate the common proportion and then make sure that we would expect at least 10 yeses and 10 no's in each sample. अब वो common proportion basically कैसे आएगा? We will be looking at the yeses in both cases, that is 91 for the black, 120 for the Hispanic, divided by the sum of their totals, that is 247 cases for the black parents and 308 cases for the Hispanic parents, and that turns out to be 211 by 555, and that is 0.38. So that means overall 38% of the people reported that their children had some swimming lessons when they were when they are from age 6 to 18, right? So we have like 94, 153 and 117, 191. So we have enough, large enough data, and we have enough cases for all of them, all of those. If this assumption is not met, अगर हमें ये like सब में बराबर जो 10 cases है वो नहीं मिलते, we can perform different tests that bypass this assumption. But for this case, we are meeting this assumption, so we are good with it. Then best estimate of the parameters. जाहिर है हम क्या करेंगे कि हम black parents का proportion निकाल लेंगे जिनके बच्चों ने swimming lessons लिए, that is 91 by 247, so that is 37% or 0.37, and similarly for Hispanic it is 120 over 308, that is 0.39, and now we get the difference of P1 hat and P2 hat, and that is 0.37 minus 0.39, that is 0.02, right?
अब बेसिकली ये हमने जो डिफरेंस निकाला प्रोपोर्शंस का वो है -0.02, और जो हमारा सवाल था वो ये था कि क्या जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस हैं ब्लैक चिल्ड्रन और हिस्पैनिक चिल्ड्रन के पेरेंट्स के जिन्होंने अपने बच्चों को स्विमिंग लेसन्स दिलवाए या जिनके बच्चों ने स्विमिंग लेसन्स लिए, क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमने ये डिफरेंस नोट किया, ये डिफरेंस हमारे पास आया -0.02। व्हाट डू यू बेयरली मेक ऑफ इट, यानी एक नेकेड आई से अगर आप इसको देखें तो आपका क्या ख्याल है कि क्या यहाँ कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं? एंड इज दैट सिग्निफिकेंट? Is that difference significant? Oh, is it too hard a question? Well, yes, there is difference, but is that difference significant? So is it significant? ओके, किस सूरत में आप ये कहते हैं कि नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है? अगर दोनों का डिफरेंस जीरो होता तो फिर तो हम ये कहते हैं कि डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब चूंकि जीरो नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंस है। तो अगला सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये, यस देयर इज डिफरेंस, बट इज दिस डिफरेंस सिग्निफिकेंट? Okay, okay, we march on with it when we try to see कि हमारा hypothesis हमें इसके बारे में क्या बताता है। So apparently हमें ये नज़र आ रहा है कि कोई 2% का फ़र्क है इसमें, जो P1 हैट बता रहा है और P2 हैट बता रहा है, इसमें 2% का फ़र्क है। इसमें 2% का फ़र्क यूँ है कि हिस्पैनिक चिल्ड्रन के पेरेंट्स ने जो स्टैट दिए हैं उसके मुताबिक उनका प्रोपोर्शन 2% ब्लैक चिल्ड्रन के पेरेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। ओके, जब हम ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, अब देखें एक प्लेन लेवल पे डेटा से हमें एक प्लेन डिफरेंस मिल गया, तो हम यही इसी प्लेन डिफरेंस पे रुक क्यों नहीं जाते और हम आगे बढ़ के ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ये हाइपोथेसिस टेस्ट और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बात क्यों करते हैं? हमें यहाँ पता तो चल गया कि 2% फर्क है, राइट? लेकिन हमने बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने एक सैंपल लिया है, हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का डेटा नहीं है। हम एक सैंपल की बुनियाद के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में इन्फेरेंस ड्रॉ करना चाहते हैं। सो हम छोटी मोटी वेरिएशंस के बारे में ये जानते हैं कि आप एक सैंपल एक बार लेते हैं तो थोड़ी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, दूसरी बार लेते हैं तो थोड़ी कम हो सकती है, एंड दिस कीप्स हैपनिंग लाइक दैट। सो इसमें जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं उनको हम पॉपुलेशन का डिफरेंस नेसेसरली नहीं कह सकते। So we need to figure out कि okay, if the difference is really crossing some threshold, so we will say that yes, this is different. Otherwise, if it is in some specific range, we will say okay, this difference can simply arise from sampling. आप एक सैंपल लेंगे तो इतना फर्क आ जाएगा, दूसरे लेंगे तो इतना आ जाएगा, so that's okay. It can be sometimes more, sometimes less. So that is what is the reason to perform all this testing and analysis. So we go ahead and in this case, for example, if I look at it with naked eye, I would say अगर आपने रिस्पॉन्स लोगों से कलेक्ट किया है और उसका रिस्पॉन्स 37% है या 39% है, तो आई वुड सिंपली गिव इट टू द सैम्पलिंग दैट यू हैव डन। लाइक अगर आप यही सैम्पलिंग दोबारा करें तो मुमकिन है कि 39 ब्लैक के लिए आ जाए और 37 हिस्पैनिक के लिए आ जाए, राइट? सो दैट्स अ बिट ऑफ रेंडमाइजेशन इफेक्ट दैट कैन पॉप अप। Okay, anyway, we go ahead and perform our test. So the test statistic in this case is the best estimate minus hypothesized estimate
divided by the standard error of the estimate, right? So basically best estimate हमारा क्या है, P1 hat minus P2 hat, which is minus 0.02. And what is our hypothesized estimate? हमारा hypothesized estimate ये था कि P1 minus P2 0 है, वो different नहीं है. So we simply subtract the hypothesized estimate, which is 0, from the best estimate, which is P1 hat minus P2 hat, which is actually minus 0.02, and we divide it with the standard error. The standard error term is basically mentioned below, which is basically अब चूंकि populations दो हिस्सों में divided है, तो we have like separated those terms 1 over n1 plus 1 over n2. Otherwise अगर एक ही population होती तो हम कह सकते थे p hat into 1 minus p hat over the sample size and the square root of the whole. So now we plug in these values. So we get minus 0.02 as denominator, and the numerator is, numerator ऊपर वाला होता है नीचे वाला होता है? Okay, so numerator is minus 0.02 and the denominator is 0.041. That is basically the error term, and when you do perform this division, you get minus 0.48, right? So now the z-score that we have received for this statistic is minus 0.48. So can you tell what does this mean, minus 0.48? Now I'm saying that, okay, we have got the z value of minus 0.48. We need to interpret this, okay, in the context of our research question, or in the context of the hypothesis test that we are doing. What does it mean? इसको हम interpret कैसे कर सकते हैं? Okay, read this statement and explain this to me कि z का क्या मतलब है जी. Yes, it is. So everybody read this statement carefully, and either you should be able to explain it, or you should be able to ask any question if you are feeling confused about any aspect of the statement. So you see, based on this, हम ये कह रहे हैं कि our observed difference in sample proportions is lower than the hypothesized mean. यानी जो डिफरेंस जो हमने ऑब्जर्व किया है P1 हैट और P2 हैट के दरमियान फर्क, वो कम है कंपेयर टू दी हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस. अब हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस था 0, और इस केस में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस बेसिकली हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के डिफरेंस में मेजर नहीं किया हुआ, बल्कि जी स्कोर के तौर पे मेजर किया हुआ है. तो हम कहते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो 0.48 कम है, बट दिस इज नॉट द डायरेक्ट वैल्यू, दिस इज बेसिकली एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर. सो हम ये कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्व्ड डिफरेंस जो है वो 0.48 एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर्स बिलो है हमारे हाइपोथेसिस मीन के मुकाबले में. ठीक है, हमारा हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस जो था वो 0 था. ठीक है, और जो हमने यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस दिया था वो था minus 0.02, और हमने इसको कन्वर्ट किया था एक मेट्रिक के अंदर विच इज जी स्कोर, और वो जी स्कोर की वैल्यू जो आई तो हमने कहा कि इतने एरर्स का डिफरेंस है इस डिफरेंस का जो हमारा हाइपोथेसाइज था और जो हमने एक्चुअल के अंदर इस वक्त मेजर किया है. नाउ वी गो ऑन एंड वी कन्वर्ट दिस जी स्कोर टू द पी वैल्यू. हमें इसको पी वैल्यू में कन्वर्ट करना है.
अब पी वैल्यू के बारे में हम ये जानते हैं, जो जी स्कोर है हमारा, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो वी नो कि जो हमारा जी मेट्रिक है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है. दैट मीन्स दैट बेसिकली इट इज लाइक दिस, राइट? सो 0 to 1. 0 1 means that its mean will be 0 and the deviation or the deviation will be 1. अच्छा, अब इस केस में जब हम 0.48 को लेते हैं, ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल से दिस इज 0, right, and this is 1, and here is the point where you have 0.48. So we say that this is 0.4 0.48 or 0.048, what was it like, or whatever. So this is the minus one, and this similarly is the, on this side this is the positive one, 0.48, right? So basically, yeah, 0.48. So basically what we are interested in is ये 0.48 है, so this is the region that we are interested in, and similarly ये 0.4 है, so this is the region that we are interested in. We are interested in both regions because जो हमारा hypothesis है P1 minus P2 not equal 0. अगर हम ये कह रहे होते कि P1 P2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव साइड पे जा रहे होते हैं, और अगर हम ये कहते हैं कि P1 P2 से छोटा है, तो फिर हम नेगेटिव साइड पे जा रहे होते हैं. यहाँ हम ना ग्रेटर कह रहे हैं ना लेस कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नॉट इक्वल. तो नॉट इक्वल का मतलब ये है कि खा वो ग्रेटर हो खा वो लेस हो, दोनों साइड्स उसके लिए सिग्निफिकेंट बनती हैं. तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम दोनों साइड्स को जो है वो मेजर करने में इंटरेस्टेड हैं. अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर पी वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे तो पी वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0.63. लेट अस जस्ट सी दैट. हमने अभी एक कैलकुलेटर की बात की थी, सो दैट इज जी स्कोर 0.48. अगर हम ले लें 0.48, कॉन्फिडेंस लेवल 0.5 रखा हुआ है, वन टेल्ड में ये 0.31 आई है, और टू टेल्ड में ये 0.63 आई है. So you see the value is 0.63 that we have got, and we are going with the two-tailed. One-tailed में ये half होती और two-tailed में ये double है. So you get this? यार तब तक तो आप इतने तजर्बेकार हो चुके होंगे काशिफ. नहीं, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं. नहीं बेटा, जो काम करना पड़ जाए ना वो मुश्किल हो जाता है ना? उड़ती चिड़िया के तो पर हमें पता, हमें कभी नहीं गिनने पड़ेंगे. बेसिकली इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इससे मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है मुझे ये बात पता है कि आप पी वैल्यूज़ याद करके तो नहीं आ सकते ना, राइट? सो इफ़ देर इज़ एनी प्लेस वेयर यू नीड टू यूज़ वैल्यूज़, यू विल बी गिवन सम काइंड ऑफ हेल्प फॉर दैट. ठीक है? सो वो लॉजिस्टिक्स जो होंगे, या आपको ये अलाउ किया जाएगा कि आप अपने टेबल्स साथ लेके आएँ, या कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई वैल्यू चाहिए और वो ज़ाहिर है आप कंप्यूट नहीं करने जा रहे हैं. सो लाइक आई वोंट एक्सपेक्ट दिस कि आप वो चीज़ लाइक यानी किसी ना किसी तरीके से खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा. सो आई विल बी डूइंग इट sanely. So the p value in this case is 0.63, which is obviously bigger than our significance level, which is 0.10. So that means that we fail to reject the null hypothesis because the p-value is much greater than the significance level. So we don't have evidence against equal population proportions. Formally, based on our sample and our p-value, we fail to reject the null hypothesis. We conclude that there is no significant difference between the population proportion of parents of black and Hispanic children who report their child has had swimming lessons. ओके, अब बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन, नाउ इफ यू अगेन गो बैक एंड सी कि जो हमारा डिफरेंस था 0 -0.02,
हमारा डिफरेंस जो आया था P1 हैट का और P2 हैट का वो था -0.02, ऐसा ही था ना? So now we are saying no, this isn't really a difference, right? So does it make sense to you now or not? Or do you feel कि नहीं हमने ज्यादती की, हमें इस डिफरेंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी? So you don't think anything about it? No, it isn't confusing. Look, the raw difference is -0.02 or 2%. ठीक है? और हम अपने टेस्ट के नतीजे में ये कह रहे हैं कि नहीं, ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है. Yes, there is a difference, but we say that this difference is not significant. ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया टेस्ट का नतीजा कि टेस्ट का रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, बताइए किसका चल रहा है माइक? कौन है ये? हु इज जुनेद? इज ही योर क्लासमेट? No, no, that was with the name Ahmad. It's okay. It's okay. It's okay. Just forget it. Just forget it. Just forget it. It's okay. It's okay. It's okay. Flush it. If you make mess of such things, अगर आप इन चीज़ों को सिग्निफाई करेंगे तो लोगों को हौसला मिलता है कि ठीक है, लोग हमसे बॉदर होते हैं तो हम ये करते हैं. Just let them do it. It's okay. ओके. तो अच्छा, अब प्लेन डिफरेंस हमें -0.02 मिला या 2% का फर्क हमें नजर आया. हमारे टेस्ट के नतीजे ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. अच्छा, अब टेस्ट को छोड़ के हम एक लम्हे के लिए प्लेन अंदाज में इस बात को डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने पहले भी अभी आपसे कहा कि बेसिकली 2% का फर्क. देखें, फर्ज करें कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसका साइज 50 लाख है. ठीक है? हमने 50 लाख में से सैंपल कितना कलेक्ट किया? लाइक 600-700 लोगों का. ठीक है? तो अब 600-700 लोगों का सैंपल आप कलेक्ट करते हैं, उसमें से जो आप मीन निकालते हैं और जो 50 लाख लोगों का मीन है, हम ये तवक्को कर सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ फर्क होगा. ठीक है? अच्छा, फिर हम एक बार सैम्पलिंग करते हैं तो मीन 1 आता है, दूसरी बार सैम्पलिंग करते हैं तो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, तीसरी बार सैम्पलिंग करते हैं तो कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, चौथी बार करते हैं तो मुख्तलिफ हो जाता है. सो हमें मालूम है कि अगर फर्ज करें कि एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन 10 है, तो जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो ये मीन मिसाल के तौर पे कभी 7 आ रहा होगा, कभी 9 आ रहा होगा, कभी 13 आ रहा होगा, कभी 15 आ रहा होगा. यानी इसमें एक खास रेंज के अंदर फ्लक्चुएशन होगी. तो हम ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम ये देखें कि जो फर्क है, क्या वो फर्क इतना वाजे है कि अगर हम इसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लेके जाएं इस क्वेश्चन को, तो ये उस पॉपुलेशन के लिए स्टैंड कर जाएगा. राइट? सो वी से नो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 600-700 का सैंपल है और वो 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2% का फर्क कोई फर्क नहीं है. इट इजंट रियली दैट, राइट? और यही चीज अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी हम करते हैं कि हम एक रेंज बना लेते हैं ना, कि अगर वो वैल्यू इस रेंज के अंदर है तो इसका मानी कुछ और है, अगर बाहर है तो मतलब कुछ और है. राइट? सो दैट इज व्हाट वी मीन आउट ऑफ इट.
अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिकली थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि इफ़ वी हैव लाइक डाउट्स अबाउट डेटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन और समथिंग लाइक दैट वी कैन हैव लिटिल डिफरेंट टेस्ट्स एज वेल. Chi-square is one and Fisher's exact test is one. We will not be going into the detail of any of these tests anyway, but there are like alternative ways to test the hypothesis as well. Okay, now we see another example in which we say that we will be testing hypothesis about a population mean. तो अभी जो examples हमने देखी हैं उन examples में हमने basically population proportion के ऊपर hypothesis test किया, population proportion के difference के ऊपर hypothesis test किया, और अब हम जो examples देखने जा रहे हैं उसमें हम population के mean पे करेंगे hypothesis test और फिर mean difference पे करेंगे hypothesis test for paired data and as well as for independent data. Okay. So let's move on. So this is, and again, that the same example that we had seen earlier, that we have 25 members or colleagues, all adults, which were asked to perform a cartwheel. And the variable of interest in this case is, say, cartwheel distance in inches. कि हर एक individual जिसने cartwheel distance travel किया तो वो distance कितना था on average, and we measure this distance in inches. So, okay. Now we say, is the average cartwheel distance in inches for adults more than 80 inches? जो रिसर्च क्वेश्चन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं वो है कि क्या कार्टव्हील डिस्टेंस जो एक अडल्ट कवर करता है, एवरेज कार्टव्हील डिस्टेंस, क्या वो 80 से ज़्यादा है? Right, so now this will not be two-tailed, this will be one-tailed because we are talking about one direction only, that is greater than 80, right? So the population would be all adults will qualify for this. The parameter of interest is the population mean cartwheel distance represented by mu, and we need to perform a one sample test regarding the value of the mean cartwheel distance for the population of all such adults. So we will have one sample, right? Like पिछली example में जब हम proportions का difference ले रहे थे तो we had two samples. So we have one sample because we are talking about one mean only, and we will be testing the cartwheel distance. Now the null hypothesis that we have is that the cartwheel distance, average cartwheel distance is 80 inches. So the mu is 80 inches for us, and the alternative is that no, it is more than 80, right? Minahil Tahir, is she your classmate? Abu Huraira. Okay. Okay, so the alternative is that the population mean is greater than 80 inches. So इसी चीज को अगर हम formally mention करें तो it would be something like that. The null hypothesis says that mu is 80, and the alternative hypothesis says that mu is greater than 80, right? And the significance level that we associate with this test is, say, 5%, and the mu represents the population mean cartwheel distance for all adults. Okay. So this was the step one where we like defined the null and the alternative hypothesis. The step two is to examine the results, check the assumptions, and summarize data via the test statistic. So we have only 25 observations in our data. The maximum that we have is 633 inches. The minimum value for the cartwheel that we have in this data is 63 inches, and the maximum is 115 inches, and the mean is 82.48 inches, right? And the standard deviation is 15.06 inches. Again, the first vibe will come from the mean value that we have here. जो mean value है हमारे पास यहाँ पे, उससे हमें पहली vibe मिलेगी. हमें मालूम है कि जो mean हमने बेसिकली यहाँ पे हमने बेसिकली जो लिया वैल्यू, हमने ये कहा है कि इज द कार्टव्हील डिस्टेंस फॉर अडल्ट्स मोर देन 80 इंचेस. हमने जो नल हाइपोथेसिस लिया है उसमें हमने मीन को 80 अज्यूम किया है, ठीक है, और अल्टरनेटिव में हमने कहा है कि क्या वो 80 से ज्यादा है. यहाँ जो हमें मीन की वैल्यू मिल रही है वो 80 से ज्यादा है, 82.48 है. तो मेयरली इसको देख के आपका क्या ख्याल है कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे?
क्यों जी? Our null hypothesis is that mu is 80 and the mean that we get from our sample is 82.48. So do you think we will be able to reject the null hypothesis? So do you feel like that we will probably be able to reject that? ये समर कौर आपकी क्लास के हैं? Okay. Okay. So do you feel like that we will be able to reject the null hypothesis based on this? Why? Mm-hmm. Okay. अच्छा अच्छा देखिए 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 ओके 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 आई गेट दैट बट लुक you need to stop here and think about it rationally. Look, okay, it is a difference of 2%, right? So we would be able to argue about it. Okay, first answer is we don't know. The first answer would be we don't know, we will be performing the test and we will be getting the result. Okay, that is one thing that we will do and see. But naked eye से हमें क्या लगता है? Naked eye से हमें ये लगता है कि अच्छा मीन जो है like basically हम ये कह रहे हैं कि 80 है. अच्छा ये जो डेटा है जिसका मीन हम इस वक्त देख रहे हैं ये डेटा सिर्फ 25 ऑब्जर्वेशंस पे मुश्तमिल है. ठीक है. और जो एक्चुअली हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो ऑल अडल्ट है. अब दुनिया में ऑल अडल्ट्स की तादाद मुमकिन है कि लाइक 3 अरब हो, राइट? इट कुड बी लाइक मोर देन 3 बिलियन. तो 3 बिलियन और 25 ऑब्जर्वेशंस की इस वक्त हम बात कर रहे हैं. हम ये 25 ऑब्जर्वेशंस रैंडमली एक जगह पे जाके लाइक देखते हैं तो हम 25 लोगों को सेलेक्ट करके उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, वी गेट 82.48. हम यही एक्सपेरिमेंट अगर 50 बार रिपीट करें तो आपका क्या ख्याल है हमें यही मीन मिलता रहेगा? इट विल वेरी. अच्छा क्या ये बढ़ेगा या क्या ये कम होगा? यस हम कन्विक्शन से नहीं कह सकते ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये सेम भी रह सकता है, राइट? लेकिन अगर ये थोड़ा इससे बढ़ जाए तो हम सरप्राइज नहीं होंगे. वी नॉर्मल इन द रैंडम प्रोसेस वी एक्सपेक्ट दैट. अगर ये इससे कम हो जाए लाइक ये मिसाल के तौर पे अगर ये 75 आ जाए, अगर ये 85 आ जाए तो वी वोंट बी दैट सरप्राइज. हमें मालूम है मैं क्या हम एक सिंपल स्मॉल सैंपल की बेसिस के ऊपर ये मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? So based on this understanding that we are basically drawing inference on the basis of a very small sample for a very large population, we should always have a cushion or margin for that. So merely दो डिग्रीज का फर्क यहाँ पे देख के ये कहना. Who is this? ये शाहजेब शौकत आपकी क्लास के हैं? शाहजेब, why is your mic on? बेटा आपने माइक्स ऑफ रखा करें. And if there is like any person that you think is not part of your class, just immediately let me know so that we can go ahead with it. Okay. Okay. So basically, this is something that this little variation is very much expected, and we should be ready to accommodate this thing. Okay. Anyway, now we go on. The assumption, we check the assumptions. The sample of cartwheel distance measurements is considered as a simple random sample, and the normal distribution of cartwheel distances in population, right? So हम ये expect करते हैं कि जो हमारी जो population होगी उसमें जो cartwheel के distances होंगे वो normal distribution follow करेंगे, and that makes sense because इस तरह के सारे processes आमतौर पे normal distribution ही follow करते हैं. So if we like अगर हम पूरी दुनिया के लोगों से कहेंगे कि आप cartwheel बनाएं तो there will be a fraction which will be very low, there will be a fraction that will be very high, and there will be the most of the people which will be falling in the mid of it. So we say that this is not as critical. So that is also because we have large enough
sample size in this case. So, but we still graph our data. So when we graph our data, you see that it's like that ये ऐसे है जैसे हमें एक side of the bell curve नजर आ रही है यहाँ पे, right? So we cannot say that we are not following the normal distribution, but there is something like we would have expected it to be like this, right? But now if we look at the QQ plot की डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की, लेकिन QQ plot के बारे में सादा सी बात हम ये कहते हैं कि QQ plot में अगर आपके डेटा पॉइंट्स डायगोनल पे आ रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, और अगर डायगोनल से अवे हैं तो जितना अवे हैं उतनी ही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है. सो इन दिस केस यू सी दैट योर पॉइंट्स आर अ लिटिल अवे फ्रॉम द डायगोनल and also aligned with diagonal. So we are little away from it but not far away from it. And again, banking on the notion of central limit theorem, we can expect our data to be normally distributed, right? So we are not that concerned about it again. Okay. So now, based on the hypothesis we have, now we say, is sample mean of 82.48 inches significantly greater than the hypothesized mean of 80 inches? So what we need to do is we first need to measure the standard error. That is basically, so it's basically someone जो आपकी क्लास में से नेम्स अज्यूम करता है, किसी का भी नाम लेकर वो डिस्प्ले नेम अपना चेंज करके ही विल पार्टिसिपेट इन इट, right? So that's the unfortunate thing that is happening. Okay, so the standard error will be basically judged by this, right? That is the standard deviation divided by the square root of n, and then we go to the estimated standard error, that is basically s over square root of n, right? So basically, since we do not know the standard deviation in the population, so we simply go with the standard deviation of the sample, right? So इसकी basis के ऊपर हम इसको measure कर लेंगे. And now we plug in all the values in the test statistics. That will be t in this case, in the case of mean. So that will be best estimate minus the null value. The best estimate that we have currently is 82 point something, and the null value that we have assumed about the parameter of interest was 80, and we will obviously divide it with our standard error term, that is s over square root of n. So that is basically 82.48 minus 80 divided by 15.06, which is the standard deviation, divided by square root of 25. So that will turn out to be 0.82, right? Now again we face the same question. The value for the test statistic that we have got is 0.82. What does this value mean? This value mean that the जो हम मीन एस्टिमेट करने जा रहे हैं वो हाइपोथेसाइज्ड मीन के मुकाबले में ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? 0.82 ज़्यादा है. एंड व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ 0.82? दैट इज़ द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर्स, right? So we say that our sample mean is 0.82 standard errors above the null value of 80 inches, right? Now, is it that significant or not? Obviously, we need to associate some p value with it. Okay. अच्छा, अब इस केस में जब आप बेसिकली डिटरमिन करेंगे p value को, if the null hypothesis was true, would a test statistic of only t.82 be unusual enough to reject the null hypothesis? This is the question that we have obviously. कि क्या अगर हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू 0.82 है तो क्या इसकी बेसिस के ऊपर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं? So the p value in this case is probability of seeing test statistic of 0.82 or more extreme, assuming the null hypothesis is true.
right? So p-value is basically the probability of seeing test statistic of 0.82 or more extreme, assuming that the null hypothesis is true, right? So if the null hypothesis was true, t test statistic follows a student t distribution with degrees of freedom and -1. This point is not that important for now, but still मैंने आपको ये बात explain की थी कि जब हम normal distribution की बात करते हैं, so for some regulation to observe some regulations, हम mean के ऊपर जब उसको लेके जाते हैं तो हम normal distribution की बजाय उसको student t distribution में model करते हैं. और degree of freedom का मतलब basically क्या होता है कि अगर आपके n samples हैं तो उन सब की standard deviations का sum जो होगा वो 0 होगा. So if you know the standard deviation of n minus 1 samples, you can obviously tell the standard deviation of the last sample, because you will need whatever that value is, that you will need to make the sum equal 0. So since we have a one-tailed test to the right, so we will be talking about only one side of it now. Okay, so the p-value is say 0.21 in this case, and that will be basically coming from here. So we basically take this side here, 0.82 यहाँ पे हमारे पास आता है, and since we are interested in talking about the greater than side only, अगर हम not equal की बात करते हैं तो 0.82 हम दोनों sides पे लेते हैं, यानी ये side भी लेते हैं और ये area भी measure करते हैं, but now we are talking about greater than 1, so we are talking about this one. अगर हम less की बात करते तो फिर ये area ना होता, सिर्फ ये वाला area होता. So if population mean cartwheel distance was really 80 inches, then observing a sample mean of 82.48 inches or larger is quite likely. So हम ये कह रहे हैं अब कि अगर हम पॉपुलेशन मीन जो है हमारा वो 80 इंचेस है, तो जो लाइक ऑब्जर्विंग अ सैम्पल मीन ऑफ 82.48 इंचेस इज क्वाइट लाइकली, राइट? सो लाइक अगर हम एक्चुअली 50 लाख लोगों का मीन 80 अज्यूम कर रहे हैं और हम 25 लोगों के सैंपल का मीन निकालते हैं, वो 82 निकलता है, तो ये हमारे लिए कोई ऑड बात नहीं होगी. अगर वो 78 निकलता है तो ये कोई ऑड बात नहीं होगी. अगर वो इवन मिसाल के तौर पे 77 या 84 निकलता है तो मे बी वी विल नॉट बी दैट सरप्राइज्ड अबाउट इट. वी एक्सपेक्ट इट टू बी राउंडिंग अबाउट दैट पॉइंट. रेहान खिलजी कौन है जी? ये भी आपकी क्लास का है? आई डोंट थिंक सो. You should all basically make sure that the names that you have on your Google accounts are your own names, your own full names, right? So tell this to everybody that when you come in to join the class, your name should be exactly what you are doing. But this problem will remain anyway. I hope we will be shifting to the physical classes next week and we will not have to do the online session from this on. But anyway, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह. तो ठीक करवा लो बेटा. Okay. So that's the wonders of IUB. Okay, that's okay. Okay. So since our p-value is much bigger than 0.055 significance level, so we have weak evidence against the null, so that means we fail to reject the null hypothesis. And based on the estimated mean, we cannot support the population mean cartwheel distance is greater than 80 inches. अच्छा, अब इस चीज़ को हम क्रॉस टेस्ट भी कर सकते हैं. हम ये कहते हैं कि हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं कि उसके ऊपर हमारी वैल्यूज़ क्या आती हैं. सो वी नो दैट द मीन इज 82.48, द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 15.08. फॉर 25 ऑब्जर्वेशंस द वैल्यू ऑफ टी वुड बी 1.711, एंड इफ वी प्लग इन ऑल दीज वैल्यूज हियर इन दिस formula to construct the 90% confidence estimate, so we will be getting the values ranging from 77.33 to 87.63, right? So that's the basically interval. अब अगर आप इस interval को देखें तो 80 is in this interval. That means that if your actual population mean is 80,
with 95 and we construct a 90% confidence interval for that, the range of reasonable values for mean is basically starting from 77 and ending at 87. So that means कि अगर आपका mean 77 से 87 के दरमियान आ रहा है, that's not an odd thing. So इसकी basis के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि mean जो है वो 80 से ज़्यादा होगा. It can be even less than that. जिकियास, मुझे लगता है ये एक बंदा है जिसने आपकी क्लास के सारे नाम पकड़े में. Okay. Okay, now there is one thing that can be of concern to us, that we are not convinced that cartwheel distance follows a normal distribution in the population. अभी तक ज़ाहिर हम ये assume कर रहे हैं that we are dealing with the normal distributions. अगर हम फर्ज करें कि हम ये assume कर लें कि नहीं, cartwheel जो है वो normal distribution को follow नहीं कर रही, so what can we do then? So there is obviously possibility of that the data that we are dealing with is not following normal distribution. So in that case, we can basically do some kind of non-parametric test that does not assume normality. In the non-parametric analog for one sample t-test is basically Wilcoxon signed rank test. So basically we will not be going or covering the details of the Wilcoxon signed rank test, but the difference that it has is that instead of using the mean, it uses the median to examine location of distribution of measurements, right? And without going into the details of this, if we simply talk about the p-value that we get based on the Wilcoxon signed rank test, that is still much larger than 0.05. So we again fail to reject the null that population median cartwheel distance is 80 inches. So conclusion is robust to potential violations of normality even in this case. So for the population of interest, that is all adults, regardless of assumptions made on an inference approach used, there is not sufficient evidence to support that the population mean cartwheel distance is more than 80 inches. So हमने वन सैम्पल टी टेस्ट परफॉर्म करके देख लिया, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करके देख लिया, हमने जी बेटा, जो हमने नॉर्मेलिटी को लाइक के अगेंस्ट अज्यूम करके विल्कॉक्सन टेस्ट परफॉर्म करके देख लिया. सो in all cases we have been able to figure out that there is not enough evidence to reject the null hypothesis. बेटा, हमारी कौम ना इन छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ तलाश करती है, तो आप लोगों को खुश होने दिया करें, ठीक है? इन बेचारों को ज़िंदगी में पता नहीं और कुछ मैसर आना है या नहीं आना, तो इतनी सी बात पे खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं. They can play around with this, that's okay. The thing is, if we tell them that we are bothered by you, that means they have slight victory over us. So no, we are not bothered. We know the cheapness and meanness. That's not treatable disease, and we are not falling to it. Fair enough. You can do little things. Keep on doing. So hypothesis tests are used to put theories about a parameter of interest to the test. And the parameter, for example, in this case is population mean. The basic steps are that we state the hypothesis, we examine the results, check assumptions, summarize via test statistic, and then we convert our test statistic to p-value, and we compare p-value to significance level to make the decisions whether we will be rejecting the null hypothesis or not. So assumptions for one sample t-test for population mean are that data considered is random, is coming from random sample, and the population of responses is also normal, right? So, and we obviously need to know that how to interpret the p-value, the decision, and the conclusions. Okay, so let's have a little break of 10 minutes and then we will continue with the last example that we need to see today. On.
Okay जी, we start again. So can you hear me? Okay, good. बेटा ये रेहान कौन है? मोहम्मद रेहान. Who is Mohammad Rehan? Okay, so let's start from where we left it off. So you can see my screen now? Okay. So now we are basically testing a population mean difference. So we have talked about proportion, difference in proportions, mean, and now we will be talking about mean difference. So say we have 20 homes remodeling their kitchens, requesting cabinet codes from two suppliers. Is there an average difference in cabinet codes from these two suppliers? So 20 घर हैं जिन्होंने अपने किचन को रीमॉडल करना है और उन्होंने कैबिनेट सप्लायर्स दो कैबिनेट सप्लायर्स से कैबिनेट्स की कोट मंगवाई हैं और हमें जो क्वेश्चन इस वक्त रिजॉल्व करना है वो ये है कि क्या जो एवरेज प्राइसेस हैं उनमें दोनों के एवरेज प्राइसेस में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास, सो आई विल नॉट बी लेटिंग एनीबॉडी इन नाउ. So don't please ask me to do that. Okay, so the difference in cabinet codes would be that we will be noting the difference in the prices that the supplier A has quoted and the supplier B have quoted. So is there an average difference between the cabinet codes from the suppliers? The population is obviously all such houses which are basically requesting these codes, and the parameter of interest would be population mean difference of cabinet codes, that is mu d. So from average we talk about mu, and for average difference we talk about mu d. So supplier A minus supplier B is what we will be looking for. Now test for a significant mean difference in cabinet codes at the 5% significance level, right? So this is what we are going to do now. So our null hypothesis or the default hypothesis is that there is no difference in the prices quoted by two different suppliers. And the alternative hypothesis is that there is difference. So हम ये नहीं कह रहे कि एक की प्राइस दूसरे से ज़्यादा है या एक की प्राइस दूसरे से कम है, हम ये कह रहे हैं कि दोनों की प्राइसेस एक नहीं है. So that is why it is not equal to, and the significance level we have decided is 5%. So here you see the differences, like it is in the first case you see the price quoted by supplier A is 380 and the price quoted by supplier B is 325 and the difference is $55. So in the last column of the difference you can see the differences in the prices. So you see, like in most of the cases supplier A has quoted more price than supplier B. There is only the second last example in which supplier B has quoted more price of 574 compared to 568 from supplier A. So in general अगर आप इन prices को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि supplier A की prices supplier की B के मुकाबले में visibly ज़्यादा है, and but obviously we will be breaking it down to that testing. So यहाँ इन्हीं को हमने plot किया हुआ है, right? So you can see that the prices are more tilted towards the supplier A than the supplier B. Now we talk about the assumptions. We need to assume that we have a random sample of differences. So we just assume that we have a random sample of houses, and we also need the population differences to be normally distributed, or we can get around this assumption if we have large enough sample size. We don't have a very large sample. We have like 20 items in our sample, so we say okay, it's relatively or decently good enough. It's not huge, but it's not also very insignificant. So just to see how does this sample basically look like, does it represent the simple random sample or not? For that we need to see कि क्या हम
along the diagonal है हमारा data. So you see it's a little away from the diagonal, but not hugely away from the diagonal. So we need to assume that we have random sample of differences, and we need to assume that we have sufficiently large sample, or at least it is normally distributed. So we just assume that okay, if it is not perfectly normally distributed, it is not far away from that. So we can like go away with this assumption that the data is still good enough to be taken as normally distributed. And here you see that normal distribution, right? It isn't really following a perfectly normal curve, but it is not far away from the normal curve either. So we have only 20 observations. The minimum difference that we note is minus 30. That means in this case, the seller supplier B is quoting $30 more, and the maximum difference that you note is 90. That means in this supplier A is quoting $90 more than the supplier B, and the median in the median in the difference is 13.5, and the mean in the difference is 17.3, and the standard deviation is relatively large, which is 28.49. Now we put these values into our test statistic and get the t-value for that. So our best estimate is the best mean that we have got in the difference, that is 17.30, and the hypothesized estimate is that there is no difference in the mean. So that is 0. So we take 17.30 minus 0, and we divide it with the standard deviation over the number of samples, square root of the number of samples, right? So number of items in the sample. So we get 17.30 minus 0 divided by 28.49 divided by square root of 20. So the value that we get is 2.72. And now to be able to interpret this value, we can simply say कि जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है वो 2.72 स्टैंडर्ड एरर्स हायर है हाइपोथेसाइज्ड एस्टिमेट के मुकाबले में. यानी हम ये कह सकते हैं कि there is some significant difference apparently in the best estimate and the hypothesized estimate that we had for the mean. So our observed mean difference is 2.72 standard errors above our null value of 0. So any question thus far? यहाँ तक अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए. जी जी. Yes. यस. बेसिकली असल में ये वैल्यूज ज़्यादातर कन्वेंशन से आती हैं और फ्रॉम द डेटा. आम तौर पर लाइक जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में वो 95% पे हैं, या सिग्निफिकेंस लेवल इसका मतलब है कि 5% पे है. इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन द लुक एंड फील ऑफ द डेटा और द टाइप ऑफ क्वेश्चन और द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू नीड टू हैव फॉर द हाइपोथेसिस, you can sometimes relax things and you can say okay we go with the 90% confidence interval. हम intervals कोई भी compute कर सकते हैं, but normally the convention is we go with either 95% and 5% significance, or sometimes maybe 90% and 10%. So this is something that we choose. Either it is given or we choose. Okay, so now with like a degree of freedom of n minus 1, that is 19 as a degree of freedom, we can talk about this कि हमें basically p value को estimate करना है इसके लिए. So we say that again we will be like drawing something like this, right? And we will have our 0 here, we will have our 1 here, we'll have 2 here, we'll have our 3 here, minus 1, minus 2, and minus 3, right? So say this is our 0. So this is our 2. So we are at 2.72. But will it be only 2.72 on one side or both sides? क्या ख्याल है? So will we be talking about 2.72 on one side or 2.72 on both sides? We will be talking about both sides in this case. Why both sides? दोनों sides क्यों? Because
The question that we started with was नॉट इक्वल. अगर ये ग्रेटर होता तो हम सिर्फ राइट साइड में इंटरेस्टेड होते, अगर ये लेस होता तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड में इंटरेस्टेड होते. नॉट इक्वल है तो हम दोनों साइड्स में इंटरेस्टेड है. That guy is not that interesting. अंदर तो आने दें, वो फिर क्या कर सकते हैं. सब ब्लॉक कर दिया. Okay, so basically based on this we get जो p value हमें 2.72 पे दोनों sides पे मिलती है, that turns out to be 0.014, which is less than 0.05, which is our alpha or the significance level that we have. So that means we have less value than alpha, so we can reject the null hypothesis. So we have enough evidence against mean difference in the cabinet quotes is 0. So formally, based on our sample and our p-value, we reject the null hypothesis. We conclude that the mean difference of cabinet quote prices for supplier A and B is significantly less from 0. Right? So that difference is not negligible or 0 in this case. That is what we conclude. Now let's construct the 95% confidence interval to alternatively see that where do we stand. So ये values जो mean की हैं, standard deviation की हैं, और number of items in the sample, और based on this n is equal to 20, the value for t is 2.039. ये values अगर हम plug in करके ये interval compute करें 95%, so we get this interval 3.97 to $30.63. So you see that 0 is not included in the range of reasonable values for this interval, right? And if that is not included, that means that we can say with fair bit of confidence that the values are not 0, or the difference is not, like, it does not exist. There is some difference, right? So node 0 is not in our range of reasonable values for mean difference in the cabinet prices. So this interval also also like strengthens our conclusion from this, that we can reject the null hypothesis. Also, if we take the value of p based on the Wilcoxon signed rank test, we haven't talked about the details of that, but we just said that the Wilcoxon signed rank test basically uses median instead of mean. So the p value for that turns out to be 0.02, and it is still sufficient to reject the null hypothesis. So हमने इस केस में भी multiple tests perform करके देखा कि हम काफ़ी confidence के साथ null hypothesis को reject कर सकते हैं. हमने अपना regular t test किया, हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट किया, हमने विल्कॉक्सन की मेट्रिक को भी देखा. तीनों केसेस में हमने ये देखा कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं. So hypothesis tests allow you to assess theories about a population parameter of interest, where the parameter of interest in this case was mean difference, and it is the extension of the one mean hypothesis test with difference variable in this case that we were observing, and collected on same individual. So we were talking about paired data in this case, and can obtain similar information from confidence interval and Wilcoxon signed rank test that we have just observed. So if you have any questions, do let me know, please. कितना मज़ा आ रहा है यार इस बेचारे को, हमजा याकूब को, है, इसको ये सोच के कि